Welcome to AffairsCloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for two topics for July month, that is books and authors and obituary. Let's start. The first question is, who is the author of the book on children's health awareness titled Swasthya Ke Prahari? Right, so Swasthya Ke Prahari. This is the name of the book, released by Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami in the month of June. Who is the author of this book? Lalit Shaurya is the author of this book here. Take a note of this. Right. Then next is, in June, former Indian player V. Vishwanath Kumar, right, honored on his 90th birthday with the launch of a commemorative book titled Celebrating V. Kumar at 90 in Chennai, Tamil Nadu. He was related to which of the following sport? He was related to cricket, right? And this was, take a note of this, launched during when the celebration for commemorating a book. This was launched during the 90th birth anniversary of V. Kumar. Next, who released the book titled Sustainable Wellness of Students, A Collective Responsibility in Higher Education? This was edited by Lata Pandey and Dr. Ramanathan. Right? So, who released this book? This book was released by Pushkar Singh Dhami, the Chief Minister of Uttarakhand, and who are the author here? And who this book was edited by Lata Pandey and Dr. Ramanand. Right? Take a note of this. Now let's move to some obituary questions. Shekhar Dutt, the former Secretary of the Ministry of Defence and former Governor of which state, passed at the age of 80? So he was the former Secretary of the Ministry of Defence and former Governor of Chhattisgarh, who recently passed away. He served as the 4th Governor of Chhattisgarh, right, from 2010 to 2014. Next, name the former member of parliament from Gonda and former member of Legislative Assembly of UP who passed away at the age of 87. So Kunwar Anand Singh, right? He is the former MP from Gonda and former MLA from UP who passed away in Lucknow, UP at the age of 87. Next, Norman Tebbit, who passed away at the age of 94 in July, was a former pivotal cabinet minister in United Kingdom, that is in UK. He was born in 1931. Next, name the veteran Indian actress and Padma Shri and Padma Bhushan awardee who passed away at the age of 87 in July 2025. So, Saroja Devi. Correct. She is widely known as the B. Saroja Devi, the veteran Indian actress, Padma Shri awardee and Padma Bhushan awardee, passed away at the age of 87 in Bengaluru, Karnataka. Next, the renowned Telugu actor and Padma Shri awardee Kota Srinivasa Rao, who passed away at the age of 83, was conferred the Padma Shri in which year? He was conferred with the Padma Shri in 2015. Right? Take a note of this. Then next, Muhammadu Buhari, the former president of which country, passed away at the age of 82? He was the former president of Nigeria. He served from 2015 to 2023. Next, name the world's oldest marathon runner who passed away at the age of 114 in July 2025. So, Fauja Singh, right? He is the world's oldest marathon runner who passed away at the age of 114. He belongs from Punjab. Next, mention the Oscar, Grammy and Emmy winning American lyricist who passed away at the age of 99 in July 2025. So, Alan J. Bergman. Right, he's an Oscar, Grammy and Emmy winning American lyricist, passed away at the age of 99 in Los Angeles, California, USA, born in 1925 in New York, USA. Then next, V.S. Achuthanandan, who passed away at the age of who passed away on 21st of July, served as the Chief Minister of Kerala. From where? He served as the Chief Minister of Kerala from 2006 to 2011. Right? Take a note of it. Passed away at the age of 101. Next,
Mention the name of the renowned theatre director and Padma Shri awardee who passed away at the age of 77 in July. So, Ratan Thian, right? He is a famous theatre director and Padma Shri awardee, passed away at the age of 77 in July 2025. So, take a note of this, students, right? And he received this Padma Shri award in 1989. Next, identify the Indian-born British economist and a member of the UK House of Lords who passed away at the age of 85 in July 2025. So, Meghanand Jagdish Chandra Desai, right? He is the famous Indian-born British economist and member of UK, that is House of Lords, who passed away at the age of 85. And in 2008, he was honored with Padma Bhushan. Next is identify the correct statement regarding Padma Shri awardee T.N. Manoharan who passed away in July. If we look at the options here, option B and option C are right, A is wrong. A is saying that the Manoharan was the chairman of Bank of Baroda. Is it so? Is it correct? So remember, if question asks, he was not the chairman of Bank of Baroda but IDBI Bank. He was the chairman of IDBI Bank. Now all the options are rightly mentioned. Right, students, now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. In June, Defense Research and Development Organization, that is DRDO, they have developed India's first indigenous what? It is first indigenous photonic radar. This is a major significant milestone in India's air defense technology with ultra high resolution, stealth detection and immunity to electronic jamming. Next, without using which material researchers at Pennsylvania State University of USA has built a computer from scratch that showed the possibility to replace the material that fueled the bulk of technology advancement by making devices even smaller and faster. So, without using which material researchers at Pennsylvania they developed a computer, it is silicon. Without using silicon, this milestone was achieved. Next, name the Indian naval ship commissioned into Indian Navy at Yantar shipyard in Kaliningrad of Russia, making it the 8th in the series of Project 113.6 of Talwar class and the second vessel in the follow-on Tushil class of ships. So, name that INS commissioned. What is it? It is INS Tamal. Indian naval ship Tamal. Next, in July, Indian Navy received the stealth frigate Yard 12652, that is Udayagiri, from Madgaon Dock Shipbuilders Limited, that was delivered under which project? It was under the Project 17A. Next, mention the name of the company that made history by becoming the first Indian company to design and manufacture enterprise grade solid state drives. So, mention the name of the company. It is MyFi Semiconductors Private Limited. Next, name the hypersonic vehicle whose test flight was conducted successfully by China in July, marking a significant technological advancement in rocket-based combined cycle propulsion. So, name that hypersonic vehicle. It is Ventian 2. Right? Very important. It was recently only discovered and launched, and it was tested, and it is a key enabler of sustained hypersonic flight. Next, identify the name of the company from which India's Paras Anti-Drone Technology Private Limited received a letter of intent for 30 units of the Chimera 200 anti-drone systems worth 22.21 crore rupees. So, identify the name of the company from which India's Paras Anti-Drone Technologies Private Limited they received this letter of intent. It is Cerber. Right, this is the company. Next, where did the DRDO laboratory, Defense Electronics Application Laboratory, successfully conduct the field trials of software-defined radio, manpack and compact trans-horizon communication system? So, where did this DRDO laboratory and they successfully conducted the field trials? These were conducted in Uttarakhand. Next, mention the name of the company which is set to become India's first private company to offer satellite communication services using a locally built geostationary satellite to users across the country. So, mention the name of that company. It is Anantnath Technologies Limited. Next, what is the name of the interstellar comet discovered by NASA that originated far from beyond our solar system, making it the third confirmed interstellar object detected in our solar system neighbor? And on social media, students, it is going on that this is an alien ship, right?
and the aliens will be visiting Earth. So it is a interstellar object, not a alien ship, just to clarify, and it is 3I Atlas. Correct, and this is the third interstellar object, so 3I. Next, mention the name of the company that partnered with Synergy Quantum India Private Limited to build India's first indigenous quantum secure satellite with an aim to strengthen the national space infrastructure against emerging quantum threats. So mention the company that partnered with Synergy Quantum. It is Space Transportation Systems. Next, the Indian Navy successfully conducted the user trials of ERASR, ERASR, that is an indigenous anti-submarine weapon system. It was tested from INS Kavarati. This is also an important question, right? It was tested between 23rd of June to 7th of July. Next, mention the name of the Indian naval ship delivered by Hindustan Shipyard Limited in July to the Indian Navy at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So mention the name of that INS. Which is that INS? It is INS Nistar. Next, in July, where did ISRO? They successfully conducted the 2 short duration hot test of the Gaganyaan service module propulsion system. So where was it tested? It was tested in Mahendragiri in Tamil Nadu. And the test here lasted 30 seconds and 100 seconds respectively. Next, which company received the final regulatory approval from InSpace to offer commercial satellites broadband services in India? So, which is that company? It is Starlink Satellite Communication Private Limited. Next, who became the youngest astronaut in training aiming for NASA's first human mission to Mars and on track to become one of the first people to set foot on Mars? So, who became the youngest astronaut in training? Elisa Carson, right? And for NASA, and first human to Mars and on track to become one of the first people to set foot on Mars. And it is expected that once she will go to Mars, she won't be returning back to India or returning back to the Earth. Next, where did DRDO and Indian Air Force they jointly conducted a flight test of the indigenously developed beyond visual range air-to-air missile, that is Astra, that is equipped with indigenous radio frequency seeker. So where was it tested? ITR Chandipur of the coast of Odisha. This was tested. Next, mention the name of the geostationary communication satellite developed by Israel Aerospace Industries in partnership with Israeli Space Agency, launched into space from Florida, USA. So mention the name of that geostationary communication satellite. It is DROR-1, DROR-1, and it was launched using the Falcon 9 rocket. Next, identify the country that developed the world's lightest brain control device named Cyborg B, weighing 74 milligrams, that can be used to control the movement of the bees. And it is China. This is a significant development, students. It can be very dangerous if used in a wrong way. Next, DRDO, they handed over 6 indigenously designed and developed strategic products to the Indian Navy in Jodhpur, Rajasthan. Identify the one that is not in the list of the 6 products here. So among the following, it is execution survival vessel is not among the 6 products that are here. So option 3 is right for us. Next, India received the second GEF404 IN-20 engine from General Electric Aerospace for Lloyd Combat Aircraft Tejas Mark 1A program. This General Electric Aerospace belongs to which country? This General Electric is of United States of America. Next, Space Exploration Technologies Corporation, that is SpaceX of USA, they successfully tested the launch of 24 Amazon Kuiper broadband internet satellite using the Falcon 9 rocket from Cape Canaveral Space Force Station in Florida, USA. Next, identify the correct statement regarding the successful trial of 3 missiles conducted by the Indian Army in July. If we look at the options, all these 3 options are rightly mentioned. Next, mention the company that launched Indian naval ship Ajay, the final of the 8th anti-submarine warfare shallow water craft built for Indian Navy to strengthen the maritime defense capabilities of India. So mention the company that launched the INS Ajay. It is GRSE, Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited. Next, identify the first indigenous recombinant chimeric multi-stage malaria vaccine for which Indian Council of Medical Research invited the expression of interest for transfer of technology for commercial production in July 2025.
So identify the first indigenous recombinant chimeric multistage malaria vaccine. What is the name of that? It is Adfelcivax. Next, Apollyon Dynamics, a startup based from which institute successfully delivered the indigenously developed unmanned aerial vehicle, that is UAVs, to the Indian Army in July. So this is a startup from BITS Pilani. नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूडाइस प्लस रिपोर्ट जो कि FY25 अकेडमिक ईयर के द्वारा के लिए रिलीज की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहां पे देखें तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इनके द्वारा अभी नारी रिपोर्ट रिलीज की गई, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लिस्टेड इन द टॉप 5 सेफेस्ट इंडियन सिटीज फॉर वीमेन इन 2025 एज पर द रिपोर्ट। तो यहाँ पे भुवनेश्वर इस लिस्ट में लिस्टेड नहीं है। अगर हम डाटा देखें तो कोहिमा टॉप पर आता है ऑफ नागालैंड, देन विशाखापट्टनम ऑफ आंध्र प्रदेश सेकंड पे, थर्ड पे भुवनेश्वर सिटी ऑफ उड़ीसा, देन ऐजवाल ऑफ मिजोरम फोर्थ पर, एंड गैंगटॉक एट 5th पोजीशन ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो ये टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज है इंडिया में। नेक्स्ट, किस कंट्री को इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट बाय सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स ड्यूरिंग द 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि अगस्त में हुई इन फुके, थाईलैंड। सो किस कंट्री को इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड? यहां पर वो है हमारी कंट्री इंडिया। मार्क करेंगे, इंडिया करंटली होल्ड करता है द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, राइट? टेक अ नोट ऑफ दिस। यहां पे इसकी थीम भी याद रखेंगे, थीम रहेगी मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, mention the country with which India signed a memorandum of understanding to bolster the technical cooperation in agriculture and allied sectors including livestock. So mention the country with which India signed a memorandum of understanding, वो है भूटान। नेक्स्ट, वेयर डिड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये अभी इसका पार्टिसिपेशन हुआ जहां पे 700 से भी ज्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एंड हेडक्वार्टर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो वो है इजिप्ट में, ये हमारा इवेंट हमें देखने को मिला था जहां पे 700 पर्सनल्स ने फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्स पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ टू एनहेंस द क्रेडिट एक्सेस फॉर MSMEs, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड डिजिटल सॉल्यूशन। तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया गोल्डमैन सैक्स को ताकि ये जो अपने डाइवेस्टमेंट करेंगे वो कर सके इन द 4 पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड ये सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर रहेंगे। किन बैंक में यहाँ पे डाई इन्वेस्टमेंट होगी? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट, किस टाइप का लाइसेंस ग्रांट किया गया आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को बाय RBI? तो पेमेंट एग्रीगेटर का ये लाइसेंस रहेगा जिससे ये मर्चेंट को पेमेंट भेज सकते हैं और उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं विद इन इंडिया ओनली, क्रॉस बॉर्डर नहीं है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया भारत पे के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च इंडिया का पहला EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड को विच विल ऑपरेट ऑन द रूपे नेटवर्क। तो आइडेंटिफाई द बैंक, वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में इशू किया गया ऑफ EY इकोनॉमी वॉच, जो कि ENY के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। ये बताता है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी बाय विच ईयर, 2038 तक। एंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया की जो इकोनॉमी हो GDP होगी $34.2 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, एंड हम सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड्स एज अनाउंस्ड इन अगस्त 2025। तो अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन अगस्त हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किनको अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? वो है अनीश दयाल। एंड ये किनको रिपोर्ट करेंगे? ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू NSA अजीत डोवाल जी। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किनको अपॉइंट किया गया नया वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? तो किनको अपॉइंट किया गया? यहाँ पे डॉक्टर राजीव रंजन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर
ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक आने वाले 5 साल के लिए। करेक्ट, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स वॉज रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर उर्जित पटेल, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट IMF बाय ACC। तो यहाँ पे इनको 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, किन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ BCCI अगस्त के महीने में, जब रॉजर बिन्नी ये 70 साल के हो गए एंड यहाँ पे रूल है कि 70 साल के होते ही आप यहाँ पे रिटायरमेंट होती है, राइट। तो किन्होंने चार्ज संभाला एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, वो है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट, इन अगस्त सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC ऑफ जापान, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू एक्वायर अप टू हाउ मच % पेड अप कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स इन येस बैंक लिमिटेड। तो 24.99% यहाँ पे स्टेक रहेगा, मार्क करके चलेंगे। एंड इनका ये अप्रूवल 1 साल तक वैलिड है। नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का, तो वो है ओडिशा में। नेक्स्ट, इसरो, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, राइट, जहां पे पैराशूट को ड्रॉप किया जाएगा, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा। एंड जब अगर जो सेफ लैंडिंग होगी, राइट, उसको प्रमोट करने के लिए क्रू की सेफ लैंडिंग के लिए ड्यूरिंग द गगनयान मिशन ये टेस्ट किया गया, राइट। तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था, कहां पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी 2 INS कमीशन किए गए हैं इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एक है INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। उदयगिरी की अगर हम बात करें, ये आपका सेकंड है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, राइट। प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास का ये फ्रिगेट है, राइट, एंड ये सेकंड आ जाता है यहाँ पे, हिमगिरी थर्ड आ जाता है। यहीं पे हिमगिरी को बनाया गया किसके द्वारा, GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। उदयगिरी को मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। मूविंग ऑन, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री दैट लॉन्च देयर एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा यूजिंग नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट इन अगस्त 2025। सो मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री जिन्होंने इसको लॉन्च किया, वो है इजराइल। नेक्स्ट, इन अगस्त वेयर डिड इंडिया, इन्होंने होस्ट किया एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी को फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट रहा। तो कहां पे इसको होस्ट किया गया, उत्तराखंड में इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट, वेटरन इंडियन क्रिकेटर चिश्तावर अरविंद पुजारा, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। ये होल्ड करते हैं रिकॉर्ड फॉर द 525 बॉल्स, जो कि मोस्ट बॉल्स इन्होंने फेस की बाय एन इंडियन इन द टेस्ट क्रिकेट, राइट। इसी के अलावा इनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इन अगस्त 2025। सो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यह है ऑफिशियल मैस्कॉट यहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या है, हिमालयन किंगफिशर। आई रिपीट, ये है हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। और यहां पे लोगो क्या रहेगा, ये तो है मैस्कॉट, लोगो क्या रहेगा, एक शिकारा एक हाउस बोट हो जाती है ऑन डल लेक। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया किस स्टेट को एज द होस्ट सिटी फॉर फाइड वर्ल्ड कप 2025 शेड्यूल्ड इन नवंबर 2025। तो किसको डिक्लेयर किया गया, विच स्टेट एज द होस्ट सिटी, गोवा यहां पर होस्ट सिटी रहेगी। नेक्स्ट, जूलियन वेबर, इन्होंने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी डायमंड लीग में, जो कि जेवलिन थ्रो का इवेंट होता है। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में ये इवेंट हुआ था। इंडिया के नीरज चोपड़ा, इनकी सेकंड पोजीशन रही यहां पर इस इवेंट में। जूलियन वेबर जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 85.01 मीटर का, वेरेस जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से है, इनका थ्रो था 91.57 मीटर का। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे, ये ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 23 अगस्त टू ऑनर द हिस्टोरिक सक्सेस ऑफ इसरो के कौन से मिशन का, चंद्रयान 3 मिशन का, एंड सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसी को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जानते हैं। इसको ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 29 अगस्त टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम, ध्यानचंद जी, राइट। काफी फेमस व्यक्ति रह चुके हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हॉकी से ये रिलेटेड थे, विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से इनको जाना जाता था। एंड इस बार हमने 14th एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल स्पोर्ट्स डे का। नेक्स्ट, और कब, 29 अगस्त को। नेक्स्ट,
इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे 30 अगस्त को टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज की इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अनाउंस किया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सन 2000 में ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। एंड पहली बार जो इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 30 अगस्त 2001 में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, कौन है चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एल्डेवीज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एज ऑफ अगस्त 2025? तो वो है राजेश शाह। Next, in August, which two state governments agreed to carry out all future activities, including plantation, jointly in the disputed area belt along their interstate border? तो कौन सी दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्री किया टू कैरी आउट ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज? वो है नागालैंड एंड असम के द्वारा। नेक्स्ट, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट इन FY25? तो इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या थी? $7.45 बिलियन। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेट म्यूजियम जिसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अगस्त के महीने में एट वानखाड़े स्टेडियम इन मुंबई। तो स्टेडियम का नाम क्या है? शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म को जिसने पार्टनर किया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च EZ पेंशन प्लान। तो policybazaar.com ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहां पे पार्टनर किया। नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया बाल मित्रा कैंपेन को टू रिकनेक्ट द स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन विद फॉर्मल एजुकेशन? 16 से 14 साल के जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको वापस स्कूल में ले जाने के लिए लॉन्च किया गया। एंड कहां पे ये लॉन्च किया गया? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने रिकॉर्ड किया ओवर $100 बिलियन ट्रेड विद इंडिया इन FY25 विद इंडियाज कम्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग $75 बिलियन बिटवीन 1996 टू 2024। वो है अफ्रीका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन ऑफ स्पिनर जिन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम IPL। वो है रविचंद्रन अश्विन, काफी फेमस स्पिनर हैं ये। नेक्स्ट, इन विच सिटी केम्बगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड? तो ये बेंगलोर में लोकेटेड है, बेंगलुरु में।